Okay, Meadow, so welcome back to you. And together we can project, as you know, we have a wonderful lady here, Fareeha Jay, and she's, mashallah, a registered dietitian and a diabetes specialist. And we're inviting Fareeha Jay to really come and talk to us about healthy eating, especially agar आपको डायबिटीज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या इस किस्म की कोई रेसिपीज चाहिए इस किस्म की खाना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम आपको फरिया जी Assalam, Tamriz. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया. यू आर वेलकम जी यू आर वेलकम माशाल्लाह आपको खुशामदीद सबसे पहले रमज़ान मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. कैसे जा रहा है आपका ये रमज़ान शरीफ Yes, Ramzan is going fine. अच्छा जा रहा है. लंबे हैं रोजे लेकिन आई थिंक पिछले साल से बेटर जा रहा है. जी ऑफ हाँ कोर्स यस हाँ हाँ हाँ. माशाल्लाह All गुड good. सो फरिया जी आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी प्लीज़ अगर अगर कर सकें तो So I'm a registered dietitian and जी I live in Plymouth. मैं NHS के साथ भी काम करती हूँ. So I'm a diabetes specialist, but जी that is my part-time work, and I also have my own private practice. On that private practice, मैं online consultations करती हूँ with South Asians. But the best part is because it is online consultations, it's all around the globe. जी So South Asians, एक दिन मेरी appointment होगी किसी के साथ US में, एक दिन किसी के साथ appointment होगी न्यूजीलैंड में. So I I do consultations with South Asians all around the world, and I do talks and do workshops with regards to healthy eating and lifestyle. माशाल्लाह हेल्थी ईटिंग वी ऑल वांट टू बी हम सभी सेहतमंद रहना चाहते हैं हाँ हाँ हाँ. क्या हमें टिप्स देंगी वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स स्पेशली हमारे साउथ एशियन पीपल मेरा ख्याल है healthy eating, in reality it's eat to eat everything. It's a variety of foods. So not depriving yourself from any food, but जी understanding that how much of something you're having. So सिर्फ amounts का थोड़ा ख्याल करना है, और most of the thinking about more and more whole grains, pulses, beans, vegetables, fruits. लेकिन specifically जब you're asking about South Asian communities, तो हमारे खानों में I think our food is really healthy. There is no problem in our food. There are two problems which we have in our food. One is extensive use of oil. जी तो बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल है, and I think the portion sizes are quite big. And with time, I think as we're progressing, we are going more towards refined foods. तो जैसे पहले हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स होते थे तो वो इतना रिफाइंड फूड्स नहीं खाते थे, तो वी गोइंग टुवर्ड्स रिफाइंड फूड्स एंड ऑयली फूड्स एंड पोर्शन साइजेस. सो आई मीन अगर देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप कह रही हैं कि कोई भी खाना खा सकते हैं हर किस्म का खाना खा सकते हैं सो आदमी इस्तेमाल करते हैं क्यों हमारे लोगों की सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती क्यों खासकर डायबिटीज़ वगैरह की हाँ, प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल सही कहा आपने तमरेज. अब इसमें ये है कि एक तो हम लोगों का फोकस इस स्पेशली साउथ एशियन लोगों का, इट्स द फोकस इज ऑल ऑन कार्ब्स. द अमाउंट ऑफ रोटी हम ज्यादा खाएंगे, चावल हम ज्यादा खाएंगे, ठीक है. तो what I say is when specifically you talk about healthy eating, and specifically when you talk about healthy meals, जी मैं तीन चीजें एक मील में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी जो कि probably हम नहीं करते. अच्छा So I would include starchy carbohydrates, which are complex carbs, which I think the brown bread, brown rice, हर चीज में whole grain होना चाहिए जो कि हम नहीं लेते, ठीक है. जी और फिर हमारे portion sizes भी बहुत बड़े हैं. So our portion sizes are extremely huge. The second thing is किसी किस्म का protein. So we're thinking about lean meats, चिकन हो गया, फिश का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं मेरे ख्याल से, एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है. लेंटल्स, पल्सेस, बीन्स, इनका इस्तेमाल. जी तीसरी चीज जो कि मैं अपनी कंसल्टेशंस में जब बात करती हूँ मुझे लगता है कि बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, वो है वेजिटेबल्स. सो वी नीड टू थिंक ऑफ इंक्लूडिंग मोर एंड मोर वेजिटेबल्स. जब मैं बात करती हूँ तो मुझे कहते नहीं हम तो बस गोश्त खाते हैं, हम तो सिर्फ चिकन खाते हैं. सो द वेजिटेबल इनटेक इज वेरी लेस. And what I say is that what we say is the guidelines is that think of adding half a plate of vegetables to both your meals. जी तो अगर आप दोनों टाइम आधा प्लेट सब्जी खाएंगे, तेल का इस्तेमाल कम करेंगे, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन लेंगे, बट you're thinking about your portion sizes, लीन प्रोटीन लेंगे, लेंटल्स, पल्सेस, बीन्स लेंगे, तो you will become, eventually you will be eating a healthy
you'll be having healthy जी। meals. आप कह रही हैं सब्जियों के बारे में कह रही हैं, अक्सर हम जो है कि आंडी में सब्जी डालते हैं, आलू डालते हैं, पीस वगैरह डालते हैं, साग वगैरह डालते हैं. इज़ दैट एक्सेप्टेबल और कि ये सेपरेट डिश होनी चाहिए वेजिटेबल्स की? What I will say is that it is acceptable, but making sure that even then, when you are visualizing it, it is half a plate. Half a plate फिर भी होना चाहिए. एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब when we cook these vegetables, हम तो जब cooking करते हैं तो हम तो उनका कबाड़ा निकाल देते हैं. We cook them so much. तो मज़ा तो आना चाहिए ना, कोई उसका टेस्ट होनी तो चाहिए ना. उसमें ये है कि you lose certain vitamins, जी. but the fiber is still there. अच्छा. एंड फाइबर के बहुत ज्यादा फवायद हैं. सो द मोर द फाइबर द बेटर. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन इफ यू आर अनेबल टू हैव कच्ची सब्जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू वांट टू हैव इट इन योर ओन कुक्ड स्टाइल, have it. As long as you're having it, फिर भी half a plate लें, you'll still be getting some of the vitamins and you will be getting the fiber as well. सो सीक्रेट क्या है कि इसकी थोड़ी सी मिकदार, जिस मिकदार में हम खाते हैं वो कम करनी चाहिए? हाँ, सीक्रेट यही है कि एम टू हैव, एक अपने साथ विजुअल बना लें. एक प्लेट है, हाफ अ प्लेट में यूर हैविंग हाफ अ प्लेट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है. एंड जब आप पूरी प्लेट भर के चावल खा रहे थे, नाउ यू आर पुशिंग योर राइस टू द कॉर्नर. So quarter of your plate is your carbs and the other quarter of your plate is your proteins. So and you're bulking up your meals with vegetables. So इस तरह से आप automatically, you're not counting calories, you're not counting anything, but automatically जब आप अपने प्लेट को ऐसे formulate करेंगे, आपका intake कम हो जाएगा carbs का और चीज़ों का. So obviously the secret is in cooking these in a certain way as well, or जैसे हम normal हंडी बनाते हैं वो. Absolutely. Preparation techniques also make a difference. हम लोगों का वही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों का ऑयल इनटेक बहुत ज्यादा है हमारे खानों में. कोई खास किस्म का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? सॉरी. अच्छा, ऑयल की जब हम आप बात करते हैं तो व्हाट वी से इज दैट द हेल्थियर ऑयल्स आर योर ऑलिव ऑयल, रेपसीड ऑयल. एनी वेजिटेबल ऑयल विल बी हेल्थी बिकॉज जो भी चीज वेजिटेबल से निकलती है तो इट हैज हेल्थियर इफेक्ट्स एज कंपेयर टू एनिमल प्रोडक्ट्स से. तो घी इज हाई इन सैचुरेटेड फैट, ऑलिव ऑयल हो गया, आपका रेपसीड ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, वो लो होता है सैचुरेटेड फैट में और वही हम रेकमेंड करते हैं. लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इफ आई एम आस्किंग यू टू हैव ऑलिव ऑयल, इफ इट्स हेल्थियर यू कैन हैव देम इन लार्ज अमाउंट्स. You still have to think of how much you're having. So you still need to be mindful of the amounts. So what I say to my clients usually is that if they are putting 10 tablespoons of oil in their curry, I know our curries बगैर oil के सही नहीं बनती, नहीं अच्छा taste आता, but I say to them that जितना कम कर सकते हैं, if you're having 10 tablespoons, why not try 8 tablespoons, why not try 6 tablespoons, and that way at least you're moving towards a healthier curry if you cannot totally get rid of the oil. Okay. दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. लेकिन मैं आना चाहता हूँ, खासकर ऑब्वियसली रमज़ान शरीफ का महीना है, हम सुबह को सैरी करते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं खाया जाता. अगर मे बी वीटाबिक्स और सीरियल और समथिंग लाइक दैट, सम पीपल डू. और उसके बाद अफ्तारी पे ज़्यादा जोर होता है. नाउ क्या एडवाइस करेंगी कि ज़्यादा ना खाएं, भूख लगी होती है? बिल्कुल खाएं, लेकिन चूज द राइट काइंड ऑफ फूड्स. हम ज़्यादा क्या खाते हैं तमरेज, आप ज्यादा पकौड़े समोसे ही खाते हैं. सो द फोकस शुड बी ईटिंग द राइट फूड्स. जिस तरह से अगर we're thinking about the starchy carbs, we're thinking about the complex carbs, so we're thinking about whole meal, whole grain. So rather than having इफ्तार मील में फ्राइड चीजें खा रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं करते कि जो कि हमारे रोजमर्रा का बिफोर रमजान द मील्स व्हिच वी वर हैविंग, हम वैसे ही खाना खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, या कोई अगर मीट का कोई डिश बना है, बट दैट वे यू विल नॉट बी हंग्री, बट यू विल नॉट बी eating high sugary, high fat foods as well. Saying that, I don't want you to, सबका दिल करता है कि इफ्तार पे दे, कुछ चटपटा खाएं. Everyone feels like having something different, something nice. So you can think of dividing your iftar into 2 courses. जी. 2 कोर्स में आप करें. पहले कोर्स में यू लाइट सी इफ्तार करें, खजूर से हम अपना रोजा खोलते हैं. You can have a fruit chart, you can have something plant based
प्रोटीन्स खा सकते हैं, जैसे चना चाट हम खाते हैं या लोबिया चाट खाते हैं. सो वी नो कि उसमें टेस्ट होता है, बट देयर इज नो ऑयल इन इट. जी जी. सो द चॉइस ऑफ फूड्स विल मेक अ डिफरेंस. तो वो थोड़ा सा लाइट सा किया. इफ यू रियली वांट टू हैव समोसेस एंड पकौड़ेज, द फर्स्ट थिंग इज थिंकिंग अबाउट द अमाउंट. आर यू हैविंग 5 samosas or are you having 1 samosa? Are you having 10 pakode or are you having 2 pakode? So that's the very important thing to think of. But on top of that, preparation techniques will also make a difference. जैसे from the past 3 years I've been baking my samosas. मुझे भूल गया है कि fried samosas कैसे Baking samosas. हाँ, Oh, हाँ. that's interesting. कैसे bake करते हैं? कैसे बेक करते हैं? मैं तो खैर I get the packeted frozen samosas. I don't make them on my own. जी. लेकिन बस समोसा लिया, I brush oil on them. अच्छा. I stick them in the oven and 20 to 25 minutes में 150 degrees में वो हो जाते हैं, and they're quite crispy. But one thing I'll warn everyone that the color is not the same, and sometimes it gives you the feeling that they're not cooked, but they are cooked, they're crispy, but they won't look like the fried versions. तो कहती हैं कि टेस्ट उनकी सेम ही होती है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ट्राई नहीं की इनको. Sometimes the thing is there is a little bit of a compromise you have to make. ठीक है? It can never taste the same, but you have to train your taste buds. ठीक है? And it's the decision you have to make कि whether मुझे खैर है, कोई परवाह नहीं है, मैं समोसे खाऊं, I don't care, my cholesterol goes up, I don't care, my weight goes up. On the other hand, you say that okay, I want to look after my body, और साथ साथ फिर आप खाने का भी दिल कर रहा है. Of course, yeah. भूख लगी होती है. हाँ, तो इट्स एब्सोल्युटली, मैं हमेशा ये एडवाइस देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ आप पे कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट. Well, of course, हम सभी सेहतमंद रहना चाहते हैं. हाँ, That's one first thing really comes to mind, and then of course दिल में खुशी होनी चाहिए, और if you are सेहतमंद, then you want to look good as well. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात.